Good morning, sir. Sir, recording. Good morning, sir. Just do this question. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. ये ऑप्शन आया. Yes, sir.
by v quotient rule, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 2x कॉमन, मल्टीपल चॉइस में if you can also get an idea about the answer by some guesses, though not 100% sure, तो अच्छा रहेगा. जैसे अभी देखो इस क्वेश्चन में ये मॉडिफिकेशन के बाद ये u बाई वी होने वाला है, u बाई वी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर आने वाला है. तो ये चार ऑप्शंस में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर में वो तो सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है. नहीं, मैंने नहीं बोला कि ए इज द आंसर, मैंने बोला ए लगता है कि आंसर हो सकता है क्योंकि उसमें ही स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर है. लेकिन बी और डी रूल आउट नहीं कर सकते बिकॉज वो डिनोमिनेटर है. क्या मालूम वो ऊपर वाले कोई एक्स स्क्वायर माइनस वन से कट हुआ है क्या नहीं, दैट वी डोंट नो. एनीवेज सी सीम्स टू बी अनलाइकली. I am not a person who will ever suggest that this has to be the way how mathematics has to be done. One reason why I don't like multiple choice. ये क्वेश्चन का आंसर मैथमेटिकली डील करना है जो अभी हमने किया है और इस तरीके से ही आंसर निकालना है. Yes, just do this. On direct substitution, you will see it is 0 by 0. Students, the numerator is in the form of sin A minus sin B, sin X minus sin Y. To use the proper identity,
Sir, I got 2 cos 2. Yes, sir, I got the same. Yes, sir. Yes, 2 cos 2. इससे पहले देखो, किसी को अगर डाउट है तो पूछो, जिसको डाउट नहीं है डू दिस क्वेश्चन. Sir, I got the answer -3. -3 कैसे किया ये? So shall I send the pic? जी. Okay, sir.
ओके सौम्य. Yes students, on direct substitution ये 0/0 हो रहा है. साइन x के लिए अगर हम π/6 डाल रहे हैं तो ये 1/2 हो जाएगा. साइन x विल बिकम 1/2 if x is π/6, or 2 sin x will become 1, or 2 sin x minus 1 will become 0. तो यहाँ पे ऊपर नीचे जब हम x के लिए π/6 डाल रहा था 0/0 हो रहा है. x के जगह पे π/6 डालने से ऊपर नीचे 0 क्यों आ रहा है? दिस इज द रीजन कि इसके अंदर 2 sin x minus 1 करके कुछ तो होगा. It is this 2 sin x minus 1 which is becoming 0 and making the whole thing 0. And you see both the numerator and denominator are in the quadratic form. So factorizing by splitting the middle term is easy. मतलब this question का simple form क्या है? Simple form है limit 2x square plus x minus 1 by 2x square minus 3x plus 1 when x is tending to 1/2. Yes, here splitting the middle term. So किसको प्रॉब्लम था when x is becoming π/6? ये फैक्टर को प्रॉब्लम था. क्या प्रॉब्लम? कि इट्स गोइंग टू बिकम 0. तो हमको मिल गया वो दोनों, उन दोनों को निकाल दिया, कट कर दिया. सो दिस इज द टाइम टू अप्लाई द लिमिट. सो ये आएगा sin π/6 plus 1 by sin π/6 minus 1.
बोलो, कोई डाउट है तो बोलो. No, sir. No, sir. No, sir. मेरा स्टूडेंट्स, यस, वो हमारे में रूट वाले क्वेश्चंस क्या में क्या करना है, और रूट हटाए बिना सॉल्व करना मुश्किल हो जाए. और रूट हटाने के लिए हमारे पास एक ही टेक्निक है, रैशनलाइजिंग बाय मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट. यस स्टूडेंट्स, ये न्यूमरेटर में रूट ए माइनस रूट बी है, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं. ए प्लस 2x बट व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में भी ये रूट वाला बात है, प्रॉब्लम है, तो वो भी प्रॉब्लम ठीक करना है, तो उसका भी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बोलो, ये बात समझ में आया क्या कि अभी दोनों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा है. Yes, sir. आई हैव नॉट चेंज द क्वेश्चन because this is after all 1 and this is also 1.
ए माइनस बी, ये ए प्लस बी। ए माइनस बी, इधर ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3a प्लस x, या फिर स्टेप्स लिख के करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो देखो x इज टेंडिंग टू a, x का वैल्यू जब a हो जाएगा, तुमको मालूम है कि x माइनस a का वैल्यू 0 हो जाता है। सो इट इज दिस x माइनस a which was creating this problem of 0 by 0, and see here we have eliminated them. Now you can apply the limit directly. Wherever you have x, replace it with a. Excuse me. So, Yeah. so in the denominator, there is a 3x. हाँ,
If you want, you can rationalize the denominator also इस क्वेश्चन का. ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे आएगा 3 इंटू 3 9. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का अटेंडेंस मैंने ग्रुप में सेंड किया है. आदर्श इसमें मैं तुम्हारा नाम इंक्लूड नहीं किया बिकॉज यू हैव जस्ट जॉइन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट.
ये आइडेंटिटी याद है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा। ये जो एंगल है उसका हाफ एंगल लिखा है यहाँ पे, 2 थीटा का हाफ है वो, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 था, अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है। x जब 0 होगा तो हर एक एक टर्म 0 हो रहा है, फाइनली लीडिंग टू 0/0। हाँ, लेकिन ये सब साइन है। साइन के बारे में हमको ऑलरेडी आइडिया है कि साइन ऑफ एनीथिंग बाय दैट थिंग, limit that thing when tends to 0 will become 1. So let us try to make it in that form. Yes. Sin a plus b into x by 2 के नीचे a plus b into x by 2 चाहिए, लेकिन नहीं था तो फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देन ये वाला साइन a माइनस बी वाला, साइन a माइनस बी इंटू एक्स बाई 2 के नीचे a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स चाहिए, तो फिर इंटू भी करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर, स्टूडेंट्स यू नो लिमिट साइन स्क्वायर अगर कुछ है तो नीचे फिर इसका स्क्वायर चाहिए होता है, तो नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर सी एक्स बाई 2 के नीचे सी एक्स बाई 2 का स्क्वायर चाहिए। मैंने सी एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। बोलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, वो इस एक्स स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा। a plus b by 2, a minus b by 2, c square by 4, सब बाहर ले लिया बिकॉज दे आर टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x, so they have no business inside. ये आ गया साइन a plus b by 2 into x
बोलो, समझ में आया कि सारे कांस्टेंट्स बाहर ले लिया और तीनों को अलग अलग लिमिट दिया. Yes, sir. 2 इंटू 2 4, इस 4 के साथ कट हो गया. ये समझ में आ रहा है कि Yes, sir. Yes, sir. you're applying the limit. The solution looks big just because यहाँ पे A, B, C दिया है. उसके बदले अगर कोई नंबर्स होता तो डायरेक्टली हो जाता. एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम थोड़ा नंबर से ही कर लेते हैं, तो जिसको भी आइडिया क्लियर नहीं है वो आइडिया भी क्लियर हो जाएगा. मतलब उनको नहीं लगना चाहिए कि देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मैं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो A प्लस बी और कंप्रेस नहीं होगा, A प्लस बी ही होगा, लेकिन नंबर्स में होता तो सिंप्लीफाई हो जाता. Again, for the sake of convenience and simplicity, I have taken even numbers because नहीं तो फिर by 2 में चला जाएगा. Yes, students, see this. This is limit x tends to 0. Minus 2 sine 6x plus 4x by 2 into sine 6x minus 4x by 2 whole divided by minus 1 minus cos 2x. This is limit x tends to 0, 2 sine 5x into sine x divided by 2 sine square x. ये तो और भी इजी हो रहा है.
क्या मेरा आंसर करेक्ट है? मेरा आंसर होना चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और मैंने ए बी सी के लिए क्या वैल्यूज़ लिया? 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। यस करेक्ट है। सो इतना ही है बात। हाँ लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बस ये साइन एक्स और साइन एक्स बस कट हो गया बिकॉज द वैल्यूज वेयर इन सच केस। दूसरा कुछ अगर लेता तो शायद ये कट नहीं होता, तो थोड़ा और इजी हो गया ये। तो बेसिक आइडिया इज व्हाट वी हैव यूज्ड इन दिस वन, बट दिस लुक्स बिग बिकॉज ऑफ दैट a plus b by 2 that remains as such. Clear students? Yes, sir. Yes, sir. ഇരുപത്തിരണ്ട്. वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू n, 10th वाले को पता है कि इट इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इस साल तुम इतना बार ये सब यूज किया। सिग्मा k फ्रॉम 1 टू n इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और नीचे का n स्क्वायर ऑलरेडी है। n प्लस 1 को n से डिवाइड किया। Well students, you know that n tending to infinity का ये भी मतलब है कि 1 by n is going to tend to 0। तो ये हो गया लिमिट 1 by n tends to 0, 1 by 2 into 1 plus 1 by n। Now let your 1 by n become 0, the final answer will become 1 by 2। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल? सर स्ट्रेट लाइन चालू कर दिया है। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया था। यस सर। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पीस वाइज फंक्शन है। अगर x का वैल्यू पाई बाय 2 है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 लेना है।
बाकी सारे वैल्यूज के लिए k cos x बाई पाई माइनस 2x लेना है. So we may naturally doubt about the continuity of the function at the critical point pi by 2. लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि when x is approaching pi by 2 तब f of x का वैल्यू is same as 3. You know this is 3. क्वेश्चन में दिया है कि it is 3. x का वैल्यू जब pi by 2 है तो f of x का वैल्यू 3 क्वेश्चन में दिया है. f of pi by 2 is 3. And the approaching value is also 3. The value of the function when x is pi by 2 is 3. And the value of the function when x is getting closer and closer to pi by 2 is also 3. Limit f of x tends to pi by 2 is equal to 3. ये 3 वाला बात समझ में आना सबको. f of pi by 2 मतलब वो 3 ऑलरेडी दिया हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, लेकिन sir. कौन सा लिमिट? बिकॉज x is not for pi by 2, it can be for less than pi by 2, it can be for more than pi by 2. फिर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी होता है, राइट हैंड लिमिट भी होता है. क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं दिया है, तो मतलब यू आर फ्री टू यूज एनी वन. इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन कि द लिमिट हैज टू एग्जिस्ट, be it from the left side or right side, it has to be 3. Why we are concerned about left hand limit, right hand limit? Because that function k cos x by pi minus 2x is equally good for values x less than pi by 2 and even for more than pi by 2. तो मैं कौन सा लूँ? अलग अलग लेगा तो अलग अलग आंसर नहीं आएगा. नहीं आएगा, ये साफ क्लियर है क्वेश्चन से. अदरवाइज लिमिट f of x एक्सटेंड्स टू pi by 2 कैसे एग्जिस्ट होगा? हाँ, बट if you doubt, we'll do both. And we'll see whether we are getting the same k. So let me go for limit f of x tends to pi by 2 from the left side equal to 3. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. So on modifying ये कैसे आएगा? What is f of x? K cos x by pi minus 2x, right hand side equal to 3. Any doubt so far in the presentation part or anything? Because मैंने बोला ना, लिमिट का ये जो टॉपिक है तो ये काफ़ी सिंबॉलिक है. कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा है वहाँ पे, लेकिन माई एक्सप्लेनेशन सेंटेंस में है. It is these sentences which makes things clear, which is missing on the screen. It's not written. So if you're a student who have no basic idea about the language of limit topic, then you will not in a situation to understand what is what. इसलिए मैं step by step clear करके जा रहा हूँ. मैंने यहाँ पे इतना ही बोला है. I can directly go for a left hand limit without discussing about such a situation at all. Yes, sir, got it. Yes, sir. Usually कैसे होता है piecewise function? Some h of x will be given for x less than pi by 2.
some 3 will be given for pi by 2, and some another function will be given for x greater than pi by 2, है ना. तो pi by 2 के लेफ्ट में, pi by 2 के राइट में you have two different functions. But in our case h of x and g of x are same. मतलब लेस देन पाई बाई 2 हो या मोर देन पाई बाई 2 हो, फंक्शन एक ही है. सो मैं जस्ट पूछ रहा था, अगर मेरा x पाई बाई 2 से छोटा है तो मुझे इस टाइप के प्रेजेंटेशन में h ऑफ x लेना है, और अगर x पाई बाई 2 से बड़ा है तो मुझे g ऑफ x लेना है. लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है. हमारे इस क्वेश्चन में यही है f ऑफ x एंड g ऑफ x. h ऑफ x एंड g ऑफ x एक ही फंक्शन है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो या तो राइट हैंड लिमिट ले लो, कौन सा भी ले लो. दोनों कैसे लेगा एक साथ? कोई एक ही लेगा. अभी देखो मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट से स्टार्ट किया मैंने सॉल्व करना. यस, नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस? वी विल से लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 से थोड़ा सा छोटा. When x tends to pi by 2, h will tend to 0. So हमारा क्वेश्चन हो गया लिमिट h tends to 0 k cos pi by 2 minus h by pi minus 2 into x. X is pi by 2 minus h, but we know final value 3 होगा. k तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो. cos 90 minus theta sin theta, ये ब्रैकेट ओपन करो, you will get 2h. There is k by 2 into limit sin h by h when h tends to 0 is 3. That is k by 2 into 1 is equal to 3. Therefore k का वैल्यू आना चाहिए 6. कुछ डाउट है तो बोलो. No, sir. No, sir. स्टूडेंट्स देखो, ये है ग्राफ ऑफ द फंक्शन k cos x by pi minus 2x. Its shape will change for different values of k. लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि जब इनपुट पाई बाई 2 है तब आउटपुट 3 होना चाहिए. है ना, क्वेश्चन में दिया ना, देखो ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो f ऑफ x का वैल्यू 3 होना चाहिए. f ऑफ x यानी y यानी आउटपुट. स्टूडेंट्स लुक एट आवर
फंक्शन k cos x, जैसे जैसे x का वैल्यू पाई बाय 2 के जा रही है तो इधर किधर पहुंच रहा है, ये लेफ्ट साइड से जाके ना यहाँ पे जाके टच करना चाहिए था 3 पे, राइट साइड से भी 3 पे आना चाहिए था. सो लेट मी ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ k. k का वैल्यू 5.72 है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2, है ना. लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड साइड से एक ही पॉइंट पे मीट हो रहा है. लेफ्ट साइड से आओ या राइट साइड से आओ एक ही पॉइंट पे मीट हो रहा है, लेकिन 3 पे मीट नहीं हो रहा है. लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इट हैज़ टू मीट एट 3, और हमने सॉल्व करके देखा कि x का वैल्यू k का वैल्यू 6 है, तो ये पॉसिबल है. लेट मी सी. Yes, students. जहाँ पे पॉसिबल है मैं ग्राफ इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज दिस मस्ट नॉट जस्ट रिमेन एज सम क्वेश्चन टू बी सॉल्व फॉर सम सेक ऑफ सम मार्क्स. इट इज सम मैथमेटिकल टूल which indirectly helps you in finding the value of k, which will make the function continuous. तो वो टाइम पे जहाँ पे ऐसा ग्राफ नहीं दिखा सकता था, वो स्टूडेंट्स को इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं था. और जितना बोर्ड पे जो ग्राफ ड्रॉ करके दिखा सकता था वो कर सकता था. और जब फिर हमारे क्लास में जब बड़ा टेलीविज़न आ गया तब उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाता था. बट यू हैव बीन वाचिंग इट continuously, every chapter, wherever possible, wherever there is a possibility of visualizing it through a graph, I am showing it to you. Students, clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम करता हूँ, ये मुझे तो कोई डाउट नहीं है, तुमने अभी ग्राफ में भी देख लिया कि राइट हैंड साइड से आएगा तो भी यही होगा k का वैल्यू. ये तो हम लेफ्ट हैंड साइड से किया, अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ k व्हेन वी केम टू पाई बाई 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ पाई बाई 2. मैं इसी में चेंजेस लाता हूँ. आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन. I'll just show the steps where it will be different for the right hand limit. देखो स्टूडेंट्स, राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन वही है, x is equal to पाई बाई 2 प्लस h. When x tends to पाई बाई 2, h will be 0. तो यह आएगा पाई बाई 2 प्लस एच, इधर भी प्लस एच. यू नो कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और ये इधर माइनस. बस ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, बाकी सब सही. बोलो. Yes, sir.
मिला सी. किसी को मिला सी? Is it one? You got it? Yes. Yes, sir, I got the same. Yes, sir. So मैं first f of x is equal to x plus 2 टाइप किया, but I have given the domain of that particular portion. It is only valid for x less than -1 or equal to -1. So देखो -1 के लेफ्ट साइड में you have f of x is equal to x plus 2. You know x plus 2 मतलब mx plus c जैसा है, लीनियर इक्वेशन, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ गया. और कुछ ने बोला कि अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो सी एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन यूज करना है. अब तुमको मालूम है कि y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर पैराबोला है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पैराबोला होता है. तो सी एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बनाया, देखो पैराबोलिक शेप. A parabola in the downward direction. लेकिन ये ब्रोकन ग्राफ है. At x is equal to -1 the graph is broken. ये रेड जहां पहुंच रहा है, ये ब्लैक वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है. For this particular value of c -2.2, for different values of c you will see that it is still broken, but few students said कि the answer is 1. Let me check whether the answer is 1. c का value वन डालने से yes, ये रेड ग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है, ब्लैक वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है. मतलब लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू -1 एग्जिस्ट होता है. क्यों एग्जिस्ट होता है? बिकॉज दोनों साइड से आ जाओ, तुम एक ही जगह पे पहुंचने वाला है. कहाँ पहुंचने वाला है? एफ ऑफ -1, इट इज 1. एफ ऑफ -1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आना चाहिए. Yes, you're reaching to 1. This is the height. When you get closer and closer to -1, you're reaching to a height of 1. When your x approaches -1, your output approaches 1. Okay, तो graphically तो ये हमने देख लिया कि कहाँ ये possible है. Limit f of x tends to -1 exists ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. Therefore, limit f of x when x is tending to -1 from the left side is equal to limit of the function when x is tending to -1 from the right side. That is, limit x plus 2 when x is tending to -1 must be same as limit cx square
when x is tending to minus 1. I identified my f of x with respect to the value of x. Yes, let your x become minus 1. 0 by 0 थोड़ी आ रहा है. So you can directly apply the limit to minus 1 plus 2 is equal to c into minus 1 का whole square. 1 is equal to c. बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Students, 12th standard में the first chapter that I will be doing is continuity and differentiability, which is just a continuation of this chapter. तो कुछ आइडेंटिटीज जो हम 11th में तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आई जस्ट एक्सटेंड द टेबल, ये भी मेमोराइज कर लेना. e raised to x का डिफ्रेंसिएशन e raised to x, a raised to x का डिफ्रेंसिएशन a raised to x log a, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 by x, then sin inverse x का डिफ्रेंसिएशन 1 by root of 1 minus x square, cos inverse x का डिफ्रेंसिएशन minus 1 by root of 1 minus x square, tan inverse x का डिफ्रेंसिएशन 1 by 1 plus x square, sec inverse x का डिफ्रेंसिएशन 1 by x into root of x square minus 1, cosec inverse का डिफ्रेंसिएशन minus 1 by x into root of x square minus 1. और स्पेशल लिमिट्स हमारे पास कौन सा स्पेशल लिमिट्स है? लिमिट x रेज टू n माइनस a रेज टू n बाई x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a इज n इंटू a रेज टू n माइनस 1. ये रेडी है, मतलब इस फॉर्म में अगर कुछ ना गया तो डायरेक्टली ये यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं. और कौन सा है? लिमिट साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज़ 1. फिर लिमिट tan theta by theta when theta tends to 0 is 1. अब मैं और एक बता रहा हूँ. लिमिट e raised to x minus 1 by x when x tends to 0 is 1. तो अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में हमने स्टडी नहीं किया ना, इसलिए इस साल वो नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग दोस हु आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अदर एक्स्ट्रा बुक्स. अब एक्स्ट्रा बुक्स मतलब वो 12th का उसमें ऐड कर देते हैं. जैसे लास्ट ईयर हम 10th में काफ़ी क्वेश्चंस 11th का किया था.
So ये है three special limits, three more special limits. Using those special limits, you can easily find the differentiation of these first three functions. फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाएगा ना तो ये स्पेशल लिमिट्स यूज करके कर दो. So this list and these special limits were for those who need more, who always take few steps more than required, who always want to be ahead of others, who have understood that that's how you can be highly successful. Okay. जो लोग 9th स्टैंडर्ड से लेके पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि आई ऑलवेज क्लासीफाई स्टूडेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज मिनिमम, कि मैंने अगर इतना सिखाया, सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू बी अबव दैट, and there are students who prefer to be this. ये ऐसे मैंने वेन डायग्राम बताया लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं है बात. बट इफ़ यू कैन जस्ट कंसिडर, ये पहले तो मैंने ABC स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा था, वो छोड़ दो. कंसिडर कि दीज आर द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस दैट द C कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन डू. तुम बताओ क्या वो क्वेश्चंस B कैटेगरी वाले करेंगे? Yes. Yes, sir. हाँ, बिकॉज वो उसका सबसेट है, वो उसके अंदर है. B के अंदर C ऑलरेडी है. लेकिन क्या ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन विच यू विल फाइंड इन B माइनस C सेट, वो क्वेश्चन नंबर Q मैंने यहाँ पे मार्क किया है, दिस डॉट, दैट डॉट इज रिप्रेजेंटिंग ए क्वेश्चन विच इज श्योरली एन एलिमेंट ऑफ B माइनस C. क्या वो क्वेश्चन C करेगा? नो सर. A करेगा? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. यस. इतने आई थिंक मैंने पूरा बता दिया तुमको. Okay, students, tomorrow morning. Students, don't miss the class tomorrow. I am going to start probability. थैंक यू सर. Thank you so much, sir. Bye.